तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी डिस्कशन करी एंड वी आर सपोज्ड टू रीड इट नाउ इन दिस टॉपिक। तो डेवलपमेंट में हम ये पढ़ेंगे बेसिकली कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, और वो हाउ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल परसीव व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट, और ये किसको कितना फ़ायदा पहुंचाता है, किसको कितना नुकसान पहुंचाता है, क्या क्या आता है डेवलपमेंट के अंदर एक पूरे कंट्री बेसिस पे जब हम बात करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी दैट विल स्टडी इन आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो देखते हैं, पहला चीज़ हमारे पास ये है दैट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, राइट। तो पहली बात हमें ये समझना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट का जो मतलब है वो डिफरेंट लोग उसको डिफरेंट तरीके से समझते हैं, क्योंकि जो हमारे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, जो हमने केस स्टडी पढ़ा था, उसमें डेवलपमेंट को गवर्नमेंट बोलो या इन्वेस्टर्स बोलो, बिजनेस क्लासेस के लोग बोलो, वो ये समझते हैं कि हाँ हम एक नया फैक्ट्री सेटअप करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इकोनॉमी में, और हम माइनिंग एक्सट्रैक्शन वगैरह करेंगे, और हम स्टील मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वो वी कैन सेल दैट, वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट फाइनल आउटपुट एंड वी कैन सेल दैट इन द मार्केट एंड वी विल बी एबल टू make more money with which we can do a variety of other things. That is what development means to people like these. However, ये उन लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है जो जिन लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ रहा था, जिन लोगों को अपने घर और अपनी लाइवलीहुड छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा था, just because a few people wanted that piece of land to do mining activities. तो डेवलपमेंट उन लोगों के लिए तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ ना। दे एक्चुअली हैड टू forfeit their own homes, they actually had to make a sacrifice for the country. तो डेवलपमेंट का जो मतलब है दैट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तरह तरह के लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब जो है वो बहुत अलग होता है। किसी के लिए, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट के लिए एक डेवलपमेंट वो होगा अगर if there's some new technology which actually helps in carrying out industrial activities without damaging the environment, so that can mean development to those people. It actually means डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। जिस इंसान को जिस तरीके से फायदा पहुंच रहा है वो इंसान डेवलपमेंट को उसी नजरिए से सोचेगा। दे परसीव इट इन टर्म्स ऑफ देयर ओन बेनिफिट, right, or in terms of the benefit of the entire community or the entire nation as a whole without somebody having to pay for it. So that is what development means in a broader sense. Then there comes questions about modernization and industrialization. तो डेवलपमेंट का हमारे कंट्री में बेसिकली एक ये एक नोशन था कि दिस वाज स्पेशली ड्यूरिंग the period right after we got independence. This was in the post independence period, right? तो ऐसे में डेवलपमेंट के नाम पे लोग मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात करते थे। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन मतलब you're leaving out your traditional past and you're going towards a more modern future. You're going towards something that is better. कुछ ऐसा जो हम फॉलो करते थे उससे बेटर था। That's modernization, जो हमें ज़्यादा फायदा दे रहा है, which is up to date, which is up to date with the current times that we're living in. That is what modernization means. And industrialization की बात करें तो industrialization का मतलब बेसिकली ये मीनिंग होता है कि द इकोनॉमी इज giving more priority to industry than to agriculture, because there is always a debate between industry and agriculture. तो एग्रीकल्चर को वहाँ से उससे थोड़ा बहुत प्रायोरिटी लेके वो ज़्यादा प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज को देना कि इंडस्ट्री सेटअप हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में. That is what industrialization means. And modernization and industrialization are very related to each other, because जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे लोग फार्म्स में या एग्रीकल्चरल लैंड में काम करने के बजाय लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं. पीपल आर डूइंग मैकेनिकल वर्क, दे आर नॉट डूइंग primitive forms of farming or anything. They are doing work which requires less of human labor and more of machines.
So that is a step towards modernization, that is a step towards becoming more modern. And in that respect we can draw reference from the developed countries of the west, बिकॉज एक ऐसे टाइम पे जब हमारा देश नया नया इंडिपेंडेंस गेन किया था और हमारे देश में पॉवर्टी की हालत मतलब इतनी बुरी थी कि यू नो देयर वाज अ huge chunk of the population that was below the poverty line, and even if it was not, even the sections of the people who were above poverty line, because the poverty line itself was so low that people who were above the poverty line were also not very well off. They were, because our country was suffering because it had a colonial past. The colonization of our country by the British actually left the country devoid of any resources, and it looted away the इंडियन इकोनॉमी. तो ऐसे टाइम पे जो वेस्टर्नाइज कंट्रीज थे, चाहे हम यूएस कहें या चाहे हम वेस्टर्न यूरोप ले लें, दीज वर कंट्रीज विच वर वेरी वेल ऑफ, विच वर वेरी मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड वेरी वेरी डेवलप्ड. तो यहाँ पे आ जाता है डेवलपमेंट की बात. वो लोग डेवलप कैसे किए, हाउ डिड दे रीच दोज लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट. तो वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज का हम रेफरेंस लेते हैं कि ओके, सो डेवलपमेंट प्रॉबली मीन्स कि वी बिकम मोर एंड मोर लाइक दोज कंट्रीज, बिकॉज इंडिया वाज ऑलवेज एन एग्रेरियन कंट्री. इंडिया agrarian country, because India में agriculture was the chief source of earning. It was a very important occupation. तो उस agrarian country के उस टैग से if we were to become like the developed countries of the west, we should probably be more modernized and probably be more industrialized. This was the common notion that was associated with development, right? Moving on, development also includes ideas of growth, material progress and scientific rationality, right? तो development के अंदर क्या क्या exactly होना चाहिए, what are the things that constitute development. उसमें एक आ जाता है growth. Growth can be in in economic growth or in whatever sense, because growth means what? Means you have more benefits now. You have more of something that is actually good. That is what growth means you previously had it in small amounts and now you have it in large amounts. If we talk about infrastructural growth, or if we talk about education where some new human capital formations are there, so these things come under growth. When the economy is progressing, when there is progress, right? So these things come under growth. Next is material progress. Material progress is exactly what we talked about right now. Material progress is progress in materialistic terms, progress which can be which are in a material form and they can be actually quantified, they can actually be assessed. So that's material progress. And scientific rationality, when we have better technologies to make more rational decisions, make more rational assessments. So that is scientific rationality. So these things are included in development. These things are actually representatives of development. जब एक country में growth हो रही है, बहुत ज़्यादा growth हो रही है, या progress हो रहा है materialistic terms में, ऐसा progress जो हम measure कर सकते हैं, quantify कर सकते हैं, ऐसा scientific technologies better बन रही है, जब हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे एस्ट्रोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स, हमारे स्पेस रिसर्चेस एंड इवन साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज at a more meager level, when things like that are improving, that is when we can say that we are reaching some level of development. तो अब क्या हुआ जब हमारा देश इंडिपेंडेंस गेन किया था, when we actually the period right after we had control of our own governance, जब around 200 years बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था और इंडिया का अपना एडमिनिस्ट्रेशन बैठने वाला था, the country would be run actually by the Indian administration. तो ऐसे में our political leaders actually had to sit down together and make a model of development. What we mean by model of development is, क्योंकि हमारा देश बहुत बुरी हालत में था और हमारी because we had so much of poverty and we had so many people struggling to get basic
amenities, basic facilities, and there was nothing in our country that was going right. So ऐसे में we had to make certain quick calls, make certain rational judgments, and we had to develop the economy as a whole. तो ऐसे में डेवलपमेंट के दो मॉडल्स थे हमारे पास. हम डेवलपमेंट के पूरे आइडिया को दो तरीके से अप्रोच कर सकते थे, और ये हमारे दोनों अप्रोचेस हैं. द फर्स्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल. एंड व्हाट वी मीन बाय कैपिटलिज्म इज वेयर देयर इज फ्री मार्केट, वेयर जहाँ पे स्टेट का या गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता है, और जहाँ पे मार्केट फ्री रहती है, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, विच वी कैन सी इन यूएस एंड यूरोप. In this is basically what persists in US and in Western Europe. That's the liberal capitalist model. एक ये तरीका हम फॉलो कर सकते थे, what we exactly studied in modernization and industrialization. या हमारे पास एक socialist model था. This is an example of this is exactly what was followed in USSR, in Soviet Union before it, because it broke down, it disintegrated in 1991. But anyway, this was the socialist model is a very important feature if we are studying anything about the USSR. तो ये मॉडल था हमारे पास, और इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये था that the liberals or the capitalists did not believe much in government intervention. They wanted free markets and they wanted competition to be there. They wanted कि लोग पीपल आर एबल टू कम्पीट इन अ फ्री मार्केट. लोग अपना प्रोडक्ट बनाए, उसको मार्केट में बेचे, और अगर उसकी क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स आउट देयर, तो उनका ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी नहीं, और उनको फोर्सफुली उस चीज़ का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा. But what we have in the socialist model is a lot of government intervention. It's a government run इकोनॉमी, एंड वहाँ पे गवर्नमेंट सारे मेजर डिसीजंस लेता है. गवर्नमेंट मैक्सिमम चीज़ों का प्रोडक्शन करता है. गवर्नमेंट सेट्स द प्राइसेस, एंड द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड देयर इज नॉट मच एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, क्योंकि लोगों के हाथ में कोई अपनी देयर आर नो इंडिविजुअल ओन्ड प्रॉपर्टीज, बिकॉज सारा जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सामान है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश में, या जो भी है, सब कुछ गवर्नमेंट का है. बट इन कैपिटलिज्म व्हाट वी हैव इज देयर इज प्राइवेट ओनरशिप. लोगों के अपने प्रॉपर्टीज हैं. पीपल हैव देयर ओन हाउसेज एंड देयर ओन कार्स एंड देयर ओन पीपल कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, और पीपल कैन choose to work with the government. They have this choice, but in a socialist model, people don't have a choice, and the government is overseeing everything. And what happens, the reason why there is this so much of government governmental power is the government tries to ensure equality and justice. The government says कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी इंसान इस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पुअर हो, या कोई भी बहुत ज़्यादा रिच हो, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए दोनों के बीच में. we want an egalitarian society. We want an egalitarian society, मतलब हम इक्वालिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस, लोगों की जो द अमाउंट ऑफ मनी दे अर्न, और द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे रिक्वायर टू go by day to day for their basic amenities, that should be same, and people should be earning the same, more or less the same amount of money, because everything is done by the government. So the money that people receive, or the kind of lifestyle that they have, that's basically the government has a way of deciding that. But in capitalism, there's always a difference between the rich and the poor classes of people, because कुछ लोग बहुत अमीर बनते हैं, कुछ लोग गरीब रह जाते हैं, और ये चीज़ सोशलिज्म में, because since everything is government owned and everything is run by the government, so these things are kept in mind in socialism. तो ये दोनों हमारे पास डेवलपमेंट के मॉडल्स थे, एंड देयर वाज अ डिबेट अबाउट which one should be followed. Now हमारे जो लीडर्स थे, not just the communist parties, but even our prime minister, even people from Congress actually were very impressed with the socialist model that was followed in USSR.
तो मेजॉरिटी हमारे जो लीडर्स थे वो इस सोशलिस्ट मॉडल के फेवर में थे। वो चाहते थे कि ऐसा मॉडल हम अपने देश में लाए और डेवलपमेंट को हम इस तरह से परस्यू करें। एंड लिबरल कैपिटलिज्म के फेवर में ज़्यादा लोग थे नहीं। पीपल डिडंट वांट दिस कैपिटलिस्ट मॉडल इन आवर इन द इंडियन इकोनॉमी। So, but basically the model that we have today, or the model that we follow in every country in the world, is a mixed economy. So we have a mixed economy which tries to take the best parts of both of these. There are certain things that are run and that are owned by the government. There's certain sort of, because there's private entrepreneur, there's private ownership, and there's entrepreneurship, and there's certain things that the people are allowed to do, and the people are allowed to do it in their own way. And there are certain things which are under the control of the government. तो ये हमारे पास एक mixed economy है where people try to take the best of two of these without their drawbacks, without their shortfalls. So that is the kind that we have in our country. That was the kind that was accepted by our political leaders. ऐसे में there's a question about the role of the government, कि गवर्नमेंट का एग्जैक्टली रोल क्या होना चाहिए, किन चीज़ों में गवर्नमेंट को मेहनत करनी चाहिए, और क्या गवर्नमेंट का मोटिव या एजेंडा क्या होना चाहिए. So the first thing was poverty alleviation, because like we said, we had just received independence and we had a colonial past where we had a lot of sufferings. So poverty was poverty was very high. Even if poverty wasn't at the peak of Indian history, it was still very high. राइट तो पॉवर्टी अलिविएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए. इट वाज अ बिग चैलेंज. इट वाज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग because India is a very big country and you cannot make sure that every person in the economy is well off. So that is why it was a big challenge. And then comes economic and social redistribution. These things come under the social reforms, the programs that was initiated by the government after independence, where people said कि redistribution का basically मतलब क्या है कि we know that some people are very rich and some people are very poor. जो हमारे जमींदार थे, जो people who had big huge acres of land to their name, और कुछ लोग ऐसे थे जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जिनके पास अपना कोई फार्म मतलब कोई भी पीस ऑफ लैंड नहीं था, और वो कल्टीवेशन अगर करते थे तो दे यूज्ड टू बी हायर्ड एज टेनेंट्स इन समबडी एल्सेस फार्म, एंड वो उनके लिए कल्टीवेशन करते थे, जिसके लिए उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिलता था या उसी अनाज का कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था. तो इस चीज़ को गवर्नमेंट इक्वेट करना चाहती थी. द गवर्नमेंट से दैट पीपल शुड because we'll take some, because when people have huge acres of land, so much that they don't need so much of money that they are hoarding. So this thing should be perfected. We'll take land from the rich who have huge acres of land that they acquired by some means or the other, and we'll redistribute it among the poor who have no piece of land or who have very little piece of land. जो इनमें ये भी होता था कि अगर एक इंसान एक फार्मर है, उसके 2-3 बच्चे हैं, तो दैट लैंड गेट्स डिवाइडेड बिकॉज ही हैज टू लीव सर्टेन पीस ऑफ लैंड फॉर ईच वन ऑफ हिज चिल्ड्रन. So those fragmented pieces of land become it becomes efficient to do farming in there. तो इन चीज़ों को सही करने के लिए the governments had to redistribute lands by taking them from the poor and distributing them among by taking them from the rich and distributing them among the poor. So these were the prime roles of the government right after independence. तो ये गवर्नमेंट के सबसे मेजर challenges थे. Now having studied that, इसके बाद गवर्नमेंट के जो कोर्सेज ने परस्यू किया होगा या जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस थे, वो डिस्कस करने से पहले the one thing that we it's a little out of context, but we need to discuss this. There's a difference in our country about when it comes to politics, about political ideologies. There's a difference between left and right parties. We have actually heard this a lot of time, leftist parties and right wing parties. तो इनका बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, और why their political orientation is towards one thing more than the other. So पहली बात, इनमें एक
एक डिफरेंस ये होता है दैट दे हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट सोशल चेंज and they have different ideas about the role of the state. So how social change should conduct, whether it should be in a very instant manner, whether it should be done very quickly, or whether it should take time and progressively वो होना चाहिए. That's a basis of difference. And the role of the state, whether the state should control everything and run most things in the government, or and supervise everything that's happening, or the state shouldn't intervene at all. It should let the economy operate by itself. There should be a free market and a free economy, and there should be competition. तो ये चीजें इसका जो the belief that these people have, that's what leads to difference between the leftist parties and the rightist parties. Right, so let's discuss the left first. The left is what favors the poor and the downtrodden sections. They are very concerned about protecting the interests of the poor and downtrodden sections, because these sections actually need attention, because these need that somebody should look after them, and that is where the role of the state comes in. So that is why they think that the government should intervene more, and they support government policies. They think that the government needs to protect these sections, and these sections need that the government should protect them, and that is why they support the government's intervention, and they support government policies which are aimed at protecting the interests of these sections. Then comes the right. The right is what believes in free competition in market economy, and it is against government intervention. So right wing parties जो होते हैं, they actually rightist parties जो होते हैं, उनका the liberal capitalist model that we have. So these people also believe, like the liberalists and the capitalists, these people believe that there should be free competition. There should be a free market where people are competing with each other, and that is what leads to the quality being better. That is what leads to progress. And they are against government intervention, and they think that government को ज़्यादा interfere नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में, because that leads to inefficiency. So that is the ideology of the right parties, and this distinction is very important, because इसके बाद गवर्नमेंट के जो भी the way the government followed the path of development, so there would be conflicts between the left and the right wing parties, and this distinction is very important, and we should this should be kept in mind while studying the development procedures that was followed by the government.